Hello everyone, welcome back to our channel Cook and Chef. This is Anushka and you're watching the Chef Talk. So today we have Mr. Sujit Mondal as our guest. So let's welcome him. Welcome sir. Thank you. Good evening, Anushka. How are you? Yeah, Okay, I'm let's all start. right. All right. Please आपके बारे में आप कुछ बताइए. ओके मैं तो एक शेफ हूँ, आपको तो मालूम ही है। मेरा हाँ. ये कैरियर का स्टार्टिंग है लॉन्ग वे बैक। आई डिड माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम बॉम्बे कॉलेज। देन आई पास्ड आउट, आई जॉइंड ओबेरॉय टावर्स बॉम्बे। फिर आई वेंट टू द क्रूज इंडस्ट्री। आई वेंट टू द इटाली कोस्टा क्रूजेस, लिगाबुए कैटरिंग। आई लुक्ड आफ्टर द फ्लाइट किचन ओवर देयर। फिर 2000 साल में मैं गया ऑस्ट्रेलिया। I came back 2003 में मैं went back to USA again for celebrity. 2005 I joined Calcutta Park Hotel. I worked in Park Hotel for 3 years. Then I was in Abuja as an English chef. Then again I went back to my old company in USA. Came back and 2012 onwards I was the corporate chef of Red Cherry Hospitality. So where I stay at the food courts, restaurants, banquets, I have hotels to look after. फिर 2015 में मैं ज्वाइन किया ऑडिट स्कूल का एक नया होटल, उसका ओपनिंग था, प्री ओपनिंग किया. I was with them till 2021. Then I joined Shravanti Sarovar Portico and their hotels also as the chief culinary director. And I was there till now. But in between, now I started also side by side doing my own consultancy. I do the openings of hotels and restaurants, do the full planning for them. किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो उसका पूरा प्लान बना के उसका किचन, उसका मेनू, उसका स्टाफिंग, कौन सा एरिया में रेस्टोरेंट है तो उसके हिसाब से कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो पीपल विल लुक फॉर, और प्लस द बजट, एवरीथिंग माइंड में रख के मैं सब कुछ करके देता हूँ. Yeah, this is really great, sir. Your journey is very interesting now. Like, I want to know more about it, sir, actually. Sir, आपने ये जो फील्ड को आपने क्यों चुना? Like, ये जो शेफ वाला फील्ड है, all about. एक्चुअली मेरा टाइम जब था तब इतना होटल मैनेजमेंट कॉलेज तो था ही नहीं. जैसे इंडिया में there's only 4 colleges. That was Calcutta, New Delhi, Pusa, Chennai, and Bombay. So I Okay. choose Bombay. Bombay was the best college in Asia in those days. Our principal was Mrs. Thangam Philip. So she was the pioneer in hotel industry for India. So Oh, with Thangam Philip, she was the ma'am. She was the like very strict, and she was the one who was behind for everything for Bombay College. Not only Bombay College, the hotel management, the whole thing, universities, colleges coming up is because of Mrs. Thangam Philip. She was the pioneer for that in India. So she was my principal. So I studied over there. And that time it was a little different because people are not that well aware of the hotel industry. okay. So I joined that time. It was something different and new. So I joined the hotel management, and then slowly I had fallen in love with the kitchen and the cuisine and the cooking. After traveling so much of the world, I traveled three-fourths of the world. Oh, I wow. worked in all over Europe, Italy, Greece. I worked in South America, so USA. So it's like a the same. The type of vegetables maybe differ a little bit, but the type of cuisines change so much in all over the world. It's something really good and something really good to know about it. And there is a scientific. Everything is scientific. The way of cooking, everything is scientific. तो Okay. वही बात आ जाती है, उसमें मजा अलग ही है. Invited all the people. ओके सर. सर आपको क्या वैसे बचपन से ही लाइक कुछ पैशन था कुकिंग के लिए या फिर आपने ऐसे नहीं, ही हमारे वो टाइम में इतना तो नहीं था. But अच्छा. once I came to the hotel industry, hotel management, then once I did my training in a hotel, then I had fallen in love with the cooking. Oh, okay. So after choosing this, you fall in love for that, like that. वही. Okay, ठीक है. आपको कुछ challenges महसूस करने पड़े क्या उस समय लाइक जब ये आप फील्ड में आ रहे थे कुछ ऐसे?
कि जब मैं फील्ड में आया था नया नया तो होता है क्या, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइन। एक्चुअली आई वाज स्टडीड इन साइंस टिल 12th स्टैंडर्ड। मैं ओह जब कॉलेज ओके। में भी पढ़ने गया तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा ऑड लगा, क्या है कुकिंग कुकिंग, बट slowly had fallen in love with it because there is a lot of fun into it if you think in that way. The doing a cooking is a scientific way of cooking, like you have to go in a certain temperature. You cannot go too higher the temperature. For something you have to cook very slowly. You cannot go in a high cooking. Something you have to cook different way. The cutting, everything. So the challenges were there in the beginning, obviously, and then slowly we picked up. Even for going to working in the industry, once I started working in the industry, very different because you have to plan your work, you have to organize yourself, you have to do everything in time bound. So certain time you have to do everything, and the product has to be the perfect one, what it's supposed to be. It cannot be something different. So ओके। both the challenges starting life with hey, but then you enjoy that challenge. आपके फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट था? हाँ जी, वो तो पूरा ओके, support. दिस That was इज the नाइस। plan. ठीक है। और आजकल ना बहुत सारे शेफ्स अपना खुद का ऐसे रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? आपने कुछ जी, सोचा है मैंने ऐसे? भी किया था। जब मैं कॉलेज ओवर ऐसे छोड़ के मैं खुद रेस्टोरेंट किया था, बॉम्बे में भी किया था, नासिक में भी किया था। But that time I was pretty novice as far the business part is concerned. So I was ओके, not successful. I went over. Now I came back and now I'm planning also in future maybe I'll be opening my own restaurants also in between. ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्यूचर गोल्स। वुड यू लाइक टू Definitely. शेयर विद अस Uh, एनी फ्यूचर गोल्स यू हैव? future is like see nowadays the future is very different. You have to think before opening a restaurant. The manpower shortage after the Corona, the COVID situation, the market has या, changed a huge change. There's a lot of shortage of staff. A lot of good shortage of staff means the kitchen is a skill job. You have to be well skilled. You have to be know your things very well. Then only you can do it. The shortage of skill staff is very much less. So you have to think in a such a way that the things become easier to handle with a less manpower. It's a certain kind of product, so it will be easier to do. And then we have to plan in according to. And the budget is also a very big issue because the present situation. अच्छा। आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जो इस फील्ड में आके सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर जो स्टार्ट करें नया-नया या फिर आना चाहते हैं इसमें? So इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, this is one of the line. It will always be remain there. It will always flourish. This is not a industry which is going to go down. There's no doubt about it. हुँ, This या industry is दैट्स always going to flourish. The people who are coming into this industry, I'll always suggest to them the one thing. First thing, in the beginning phase, you have to be a little patient. Try to learn everything in details. So because if your basis becomes strong, then it becomes easier to grow in the future. It's much easier. So in the beginning, the base has to be strong. You don't think of jumping quickly in the beginning. So you ओके। can be sure of your things that your background is strong enough. सो बेसिकली कीपिंग पेशेंस लाइक इन एवरी वर्क। Yes, you have to be patient and you have to learn everything. You have to keep your eyes and ears open. You can learn so much. तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ अच्छे से बताया। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट करते हैं, दैट इज़ वी हैव द रैपिड फायर सेगमेंट। सो इसमें क्या होगा ना, मैं आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस पूछूँगी और आपको जल्दी से आंसर करना है, लाइक जो आपके दिमाग में है ना आपको वही बस आंसर कर देना है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या अपने आप को इस फील्ड में आप सक्सेसफुल मानते हैं? मतलब अभी आप जो पोज़ीशन में हैं, क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? Yes, very much. I'm a ओह, successful person. दैट्स ग्रेट। जी, तो अच्छा खाना बनाने के लिए क्या ज़्यादा मतलब व्हाट इज़ योर प्रेफ़रेंस? मतलब आपको क्या ऐसे ज़्यादा मतलब बेटर हेल्पर की आवश्यकता है या फिर बेटर इक्विपमेंट्स की? You can always have a better equipment. It's much better than a better. ओके, ठीक है। अच्छा, और एक टिप्स हम आपसे लेना चाहेंगे कि अगर खाना ठीक नहीं बना, जैसे कि अगर जल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक घर में हम जो खाना बनाते हैं अगर जल जाता है तो वेस्ट हो जाता है, तो आप कुछ Yes. टिप्स देना चाहेंगे? आपको साथ-साथ यही करना पड़ेगा कि आपको बर्तन चेंज करना पड़ेगा। अब ऊपर से जितना सामान है ऊपर से उठा लीजिए, नीचे का जो जला हुआ है वो पार्ट यूज़ मत कीजिए। और जब कुकिंग फिर से वो दूसरा पार्ट जब फिर से कुकिंग करना पड़ेगा थोड़ा-सा, तो यू ऐड लिटिल लेमन जूस एंड इट विल कट डाउन द फ्लेवर ऑफ दैट।
Oh wow, that I didn't know. Okay, we should note it down actually. ठीक है। कुछ आप ये बताइए कि आपको मतलब आप तो इतना कुछ डिशेस बनाते होंगे, तो आपको ना आपका फेवरेट कौन सा डिश है? लाइक व्हिच डिश इज योर फेवरेट I like more अपने? of a Greek food because of that flavor of oregano and the garlic. That's what is my favorite. ओ दैट्स ग्रेट एक्चुअली। आपको आपका खुद का खाना लाइक पसंद आता है, मतलब अपने हाथ से बनाया हुआ या फिर किसी और से? नहीं, मेरा खुद का ही पसंद ज़्यादा आता है क्योंकि because I know what exactly I'm going to cook अच्छा, for myself. दैट्स ओके। तो ठीक है, हम इतना आपका रैपिड फायर सेगमेंट आई शुड आई थिंक आई फील लाइक इतना ही हम करते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एक्चुअली, बिकॉज़ अभी ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपने इतना कुछ अच्छे से बताया, तो जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच सर। Thank, सो ओके, थैंक यू। thank you. Bye.